Right? So we had done this derivation last week, equation 12, right? No, not equation 12, sorry. Equation 7. Effect of temperature on heat of reaction. This is a revision of what we had done last year in PC. Exactly same thing we had done. So this shows how we can calculate heat of reaction delta H at any temperature T if we know at least one value at any other temperature, and which is normally at 298. The standard heat of reaction at 298 is normally available, which we can calculate from heats of formation. Right? तो देखा था हमने. I've seen that how to calculate heat of reaction from heat of formation. क्या था ना मैंने? कैसे करते हैं heat of reaction from heat of formation? How do you calculate heat of reaction from heat of formation? We have done this in PC also. Who can tell? Summation of product minus reaction. Right. So we can calculate heat of reaction. Let me put it somewhere here. यहाँ दिया है यहाँ पर. Heat of formation के लिए नहीं है. I can write for heat of formation. Yeah, heat of reaction. So we can say okay. Can you see this? So if you know the heat of formation of products and reactants, we know the stoichiometric numbers. We can find out what is the heat of reaction at standard conditions, which is 298 Kelvin. This is normally 298 Kelvin. Because this is available in tables. This is available, so we can directly find out what is the heat of reaction at 298 Kelvin, right? And once we know that, we can actually use this equation 7, put the 298 heat of reaction at 298. We know delta alpha, this is also available, delta beta is available, delta gamma is available, right? So if you put this as 298 temperature, you can find this value of constant delta S prime, right? That's what you are saying. Delta S prime can be calculated if delta H0 at 298 is available. So we can calculate delta H0 from tables, and we also know delta alpha, delta beta, delta gamma. We can substitute in this equation and find out what is the constant. And once we know the constant, then we can find out rate of reaction at any temperature from equation 7. Okay, is that understood? Any questions on or doubts on equation? How to use equation 7? Okay, if there are no doubts, let's proceed now. Ultimately, our objective is to find out effect of temperature on delta G, right? So we are using this equation now, effect of temperature on equilibrium constant. We have derived this equation, Vent-Hoff equation, which is dln k by dt is equal to delta H0 by RT square. If we substitute equation 7 in equation 8, here, what you get is dln k by dt is equal to delta H prime
plus delta alpha t plus delta beta by 2t square plus delta gamma by 3t cube into 1 upon RT square, right? So if you open it, you get delta S prime by RT square plus delta alpha by RT plus delta beta by 2R plus delta gamma by 3R into T. And then we integrate equation 9, you'll get ln k is equal to minus delta S prime by RT plus delta alpha by R ln T, because this is 1 by T, and delta beta by 2R into T plus delta gamma by 6, because it is T, so T square by 2 हो जाएगा, so it is 6R plus a constant A, constant of integration, right? Now you need to evaluate this constant A, which can be done if you know K value at any temperature, right? So if you know K value at one temperature, suppose at 298, from here delta G0, then we can put in this equation and find the value of the constant A, right? So what we are doing is we are putting this equation 10 in 11. What we get is delta G0 is equal to, again, minus, ये माइनस है यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा एच प्राइम आर टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल्टा अल्फा इंटू टी आर कैंसिल हो जाएगा, एल एन टी माइनस डेल्टा बीटा बाय 2 आर कैंसिल हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर टी इंटू टी माइनस डेल्टा गामा बाय 6 टी क्यूब, because t and t r cancels out, minus a into r into t. So we can find out, if you know one value of k, we can find out, if you know one value of k at any temperature, we can find out this constant a. Or alternatively, if you know delta G0 at one value of at 298 whatever, you can find out this value of a. Delta S prime we got it from here, equation 7. So these are the three equations: effect of temperature on rate of reaction, then effect of temperature on K value, and then effect of temperature on Gibbs free energy. Any questions on equation 10, 12 and 7? Okay. If there are no questions, let's proceed further. Delta G0 we can find out again from standard Gibbs free energy. If you know the Gibbs free energy of formation of compound, जैसे heat of reaction निकाल सकते हैं, वैसे free energy of reaction भी निकाल सकते हैं. Summation of Ui into G delta G of formation of products plus summation of nu I into delta G of formation of reactants. Because this is positive for products and this is negative, it will become like this: delta G0 is equal to summation over products absolute value of nu I into delta G of formation of products minus summation of absolute value of nu I into delta G of formation of reactants. Both equations are correct. We can use this or this, doesn't matter, because यहाँ पर negative है, यहाँ पर positive है, absolute value है. ठीक है? Any questions? Okay, there are no questions. Let's solve some problems. Okay, एक और है. Before we proceed further, let's look at the theory first before we solve the problem. So equilibrium constants evaluation. You know this equation,
right? This is how K is defined, and we have found out what is the effect of temperature on K, equation 1. Okay, so if you get K value at two different temperatures, you have two unknowns, right? Delta H prime and A. Then you can evaluate both these constants if you know these two. Or we have seen that if you know heat of reaction one temperature, we can evaluate delta H prime from equation 7, and then we can evaluate A from one value of K. So we need at least two data points for two constants, whether we use heat of reaction and one value of K or two values of K. This is one method. Second method is, yeah, that's what I said. Heat of reaction at one temperature and one value of K. We can evaluate these two constants. From heat of reaction we can calculate delta H prime, and then we can calculate E from this equation. So that's two methods. Third one is we don't have any experimental data, right? So what we do is we use standard Gibbs energy of formation and standard heat of formation and calculate heat of reaction as I showed you before, and delta G of reaction, right? This is what it is. Heat of reaction is essentially what we have already seen, summation over absolute value of nu I into heat of formation of products minus summation over summation of absolute value of nu I into heat of formation of reactants. Similarly, standard Gibbs energy of reaction is nothing but summation over products absolute value of nu I into heat of not heat Gibbs energy of formation of products minus summation over reactants into absolute value of nu I into standard Gibbs energy of formation of reactants. So these are all the three methods of calculating all these constants, and then you can calculate delta G at any temperature, heat of reaction at any temperature, and K at any temperature. Any questions? Okay. So if there are no questions, let's solve some problems. Okay. So let's see. We'll start with examples 9.6. Okay, can you see this? Yes, sir. So why I'm showing is because yesterday I started correcting your test papers, and I found that people have not really understood this thing. कुछ तो भी लिखते हैं, they don't even draw this diagram correctly, stability का. दोनों सेम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, हेम्प नहीं रहता है, एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है. So we had seen this, so that stability के लिए it has to be a continuous curve, right? And this is also the condition for stability, and this happens only when you have a continuous curve. When you have a discontinuous curve like this, when it turns like this, at least your diagram should be correct. Explanation आप ये बराबर लिखते हो, डेल्टा जी स्क्वायर बाय डेल्टा डी एक्स डी स्क्वायर जी बाय डेल्टा जी बाय डी एक्स वन स्क्वायर ग्रेटर देन 0, but your diagram itself is wrong. Many people have just drawn like this. ये ऊपर वाला कर और नीचे वाला कर ऐसे स्मूथ कर ड्रॉ कर दिया. मैंने समझा ही नहीं उनको क्या होता है. बाकी सब लिखा है, यू आर जस्ट कॉपिंग, आई नो, बट एटलीस्ट ड्रॉ द डायग्राम. देखकर तो कॉपी कर सकते हो. Okay, I'm not going to spend too much time on this because I already explained it many times. Let's go to the problems. Okay.
So calculate equilibrium constant at 298 Kelvin for the reaction, and 204 goes to NO2 or decomposes into NO2, given that the standard free energy of formation at 298 are this much for N204 and this much for NO2. Simple है, करो. Let's see who can do it. It's just a simple substitution जो भी मैंने फॉर्मूला बताया उसका. प्रोडक्ट का दिया है, रिएक्टेंट का दिया है, फाइंड आउट व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at 298 from delta G. So find out delta G at 298 and from there you can find out value of K. समझ में आया कैसे करने का? हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का. फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा G of reaction at 298 and then we know delta G is equal to minus RT ln K. You can find out what is the value of K equilibrium constant at 298. Simple substitution है, you can do it. समझ में आया? Yes, no, don't know. समझ में आया तो करो. And raise your hand once you finish it. It's just a 2 minutes problem. Find out what is delta G0 first. Let me know what is the value of delta G0 which you get. Already यहाँ दिख ही रहा है. Can't hide it. Okay, let me see. Note down किया था values delta G heat of standard gas range of formation का. आपने नहीं किया था. Let me show you this one then. Okay, so standard free energy of formation at 298 is 97,540 joules per mole for N2O4 and 51,310 joules per mole for NO2. So find out what is the standard free energy of reaction at 298 for this reaction. N2O4 decomposes is equal to, or N2O4 gives NO2. Okay, Vaibhav, what is the value of delta G0? Sir, 5080 joule per mole. Okay, good. और किसका हो गया है? Okay, so once you know delta G0, you can find out the value of K, because delta G0 is equal to minus RT ln K. Find out the value of K.
Yes, Pranav, what is the value of K? सर 7.77 आ रहा है. नहीं, wrong है. 7. माइनस के प्रणव हाँ? सर माइनस नहीं लिया रहेगा उसने एक्सपोनेंशियल के टर्म में. क्या बोल रहे? सेम मिस्टेक. मिस्टेक है ना, करो ना. डेल्टा G is equal to minus RTLN K. What is the value of K? What are you getting? 0.13 सर. 1 3 राउंड ऑफ नहीं करने का. डोंट राउंड ऑफ. So 0.12868. ठीक है. डोंट राउंड ऑफ. 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस करना चाहिए. डोंट राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, सबका आ गया. 0.128 समथिंग. Okay, so let's solve another problem. Next one. Example 9.7. The standard heat of formation and standard free energy of formation of ammonia at 298 Kelvin are minus 46,100 joules per mole and minus 16,500 joules per mole respectively. Calculate the equilibrium constant for the reaction. N2 plus 3H2 gives 2 times ammonia at 500 Kelvin. Assuming that standard heat of reaction is constant in the temperature range of 298 to 500 Kelvin, right? So what you need to do, how will you do it? कैसे करेंगे? Any idea? सब फॉर्मूला आपको बताया मैंने ऑलरेडी. Nobody knows? No ideas? See, standard heat of formation of ammonia is given. How much is it? Standard heat of formation of ammonia? minus 46100 joules per mole. Minus 46100 joules per mole, right? And standard gives free energy of formation of ammonia? Minus 16,500. 500, right? And what is the standard heat of formation of nitrogen and hydrogen? सर वो सर pure जीरो होगा elements है ना. ना. जीरो होगा. Always zero रहता है, right? This was from PC. For elements, it is always zero. Standard heat of reaction, heat of formation of elements is zero. Similarly, standard free energy of formation of elements is taken as zero. That's how we define it, right? So standard free energy of formation of hydrogen is zero. Nitrogen is also zero. Similarly, standard heat of reaction of heat of formation of hydrogen is zero. So you can find out what is the standard heat of reaction of ammonia from this reaction, and you can find out standard heat of standard Gibbs free energy of reaction also, right? So find out these two first. What is the value of standard heat of reaction and what is the standard free energy of reaction? So find out what is the standard free energy of reaction and what is the standard heat of reaction.
and raise your hand once you're done. किसका हो गया? ये क्वेश्चन 2017 में फाइनल में आया था आपके, एग्जैक्टली सेम। क्या हो गया है? सिंपल सिंपल है ये तो। हीट ऑफ फॉर्मेशन से हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालने का है। यस शिवानी, व्हाट इज आंसर? Standard free energy -33 और heat of reaction 92200 आ रही है। बराबर, करेक्ट, गुड। और किसी का हो गया? अरे क्या है, इतना सिंपल है। मैं बताया था, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट summation over products nu I into delta G of formation of products minus summation over reactants absolute value of nu I into standard free energy formation of reactants. Similarly for heat of reaction, products minus reactants. और किसी का नहीं हुआ क्या? रेज योर हैंड। किसका हो गया? देवेंद्र क्या हो गया, सो रहा है क्या? लॉगिंग करके सो गया क्या? कर रहा हूँ। अरे क्या टाइम लगता है रे? कितना टाइम लगता है इसके लिए? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का तो जीरो ही है। गिनने के लिए लगता है इसका। दीक्षिता, व्हाट हैपेंड? सर हुआ वो हाँ, heat of reaction and gives energy find की। प्रेस करने का ना, आई वांट टू सी हैंड्स। अगर हो गया सिंपल है, बट आई वांट टू सी हैंड्स, कितने लोग का हो गया? अदरवाइज नो वे टू नो क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सो रहे जाग रहे पता नहीं। विराज हो गया क्या? Yes, sir. हाथ उठाओ ना। ओके, सो नाउ यू नो व्हाट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, जैसे पहले किया हमने, राइट? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस, so find out K value at 298 Kelvin.
जैसे पहले वाले में क्या एग्जैक्टली सेम करने का है, फाइंड आउट के वैल्यू एट 298 फ्रॉम डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन. What is the value of R you are using? R का वैल्यू कौन सा यूज किया था पहले वाले एग्जांपल में भी? 8.314. 8.314 यूनिट्स क्या है उसका? What are the units? joules per mole per Kelvin. जूल्स पर मोल केल्विन. ओके, ठीक है. तो करो अभी. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस एग्जांपल फ्रॉम डेल्टा जी जीरो एट 298 केल्विन. हो गया के वैल्यू कैलकुलेशन? तो हाथ रेस करो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 608950.2336. ठीक है, 608950. ओके, ठीक है. सबका आ गया उतना ही आंसर? सिद्धि आ रहा है क्या आंसर? मुर्तजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो रहा है? नुपुर, आर यू स्लीपिंग? नो आंसर, स्लीपिंग. मुर्तजा क्या कर रहा है रे? कुछ कर रहा है कि नहीं? प्रवीण साठे लॉगिन करके सो गया है तो. अश्विनी पोटे, नो आंसर. भूमिका काकड़े, सर कर रही हूँ. It's like your attendance. No answer means I know you. I'm already forming an impression about you. Divya, no response. Gauri Patale, no response. Rituja Borade, सर कर रही हूँ. Kushi, no response. Krunal, धनंजय कुमार, सब सो रहे हैं. Yes sir, Yes, I'm doing. कुणाल फराटे सो रहा है. कुमार करिश्मा कुंवर सो रही है. महेश चौहान, मोहम्मद फैज, Yes, sir. निरंजन देवचके, नितिन, नुपुर, स्लीपिंग. परेश चौधरी कर रहे हो तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हो मेरे को? परेश चौधरी, और टेस्ट क्यों नहीं किया था नुपुर आपने?
So actually, I was traveling from Pune to Nasik that day the test was held. So I couldn't attempt the test because I was in the car. So it have a lot of consequences. Huh? Pranav Pawar, हाँ सर है कर रहा हूँ. प्रतीक्षा, कर रही. दो प्रतीक्षा, एक का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. सो रही है. प्रियंका, ऋषिकेश, सो रहा है. साक्षी, सो रही है. सलमान, प्रवीण साठे, सो रहा है. शिवराज तौर, श्रद्धा दर्शाले, Yes, sir. सूरज बांदल, तेजस कानाडे, सो रहे हैं. उज्ज्वला प्रेजेंट परदेसी, सर. उज्ज्वला परदेसी, Yes, sir. उमेश बेलदार, विशाल वालंज, सो रहा है. विश्वजीत यादव, 75% people are sleeping. अभिषेक कुंभाड़े, अभिषेक इंगले, सो रहा है. Present, sir. अभिजीत पाटिल, Yes, sir. कमलेश लाकड़े, Yes, sir. मोहसिन शेख, Yes श्लोक sir. श्लोक पुलकर, Doing, sir. ब्रुको, Yes sir. भास्कर, धैर्य पटेल, सो रहा है. नहीं सर, नहीं सर, नहीं सो रहा कर है. रहा हूँ सर. अरे सर कर रहा हूँ. अभी ऐसे लेने वाला हूँ अटेंडेंस में. आई एम गोइंग टू whatever attendance comes in the Excel sheet doesn't matter. The impression is already created. Okay. So K value हो गया, right? Now what you need to do is find the value of K at 500 Kelvin, right? कैसे निकालेंगे? How will you find out the value of K at 500 Kelvin? क्या याद है किसी को? नहीं याद किसी को? They're using Van Hoff Sir, equation. one tough equation. Van Hoff equation use करने का. Find out value of K at 500 Kelvin from 298 Kelvin K से. Right? Van Hoff equation याद है? नहीं याद किसी को? Sir, ln k upon dt delta h0 upon rt square. Yeah, true. ln k2 by k1 is equal to minus delta h by r into bracket 1 upon t2 minus 1 upon t1. और d ln k by dt था is equal to minus delta h by rt square. इंटीग्रेट किया तो what I get is ln k2 by k1. Let me show you here. Yeah. So use this equation, equation 10. दिख रहा है? ln k2 by k1 is equal to minus delta h0 by r into bracket 1 upon t2 minus 1 upon t1. You know heat of reaction, you know K value at one temperature, you can find out K value at second temperature.
जिसका हो गया वो हैंड रेस करेगा। What is the value of k? What is the answer you are getting? Shivani? Sir, 0.1799. Okay, good. जिसका हो गया वो हैंड रेस करेगा अपना। धैर्य पटेल हो गया क्या? सो रहा है। खुशी सो रही है। प्रणव पवार? Sir, I'm doing it. सर एक डाउट है, हाँ, वो बोलो। माइनस कंसिडर करना है ना, डेल्टा एच के अगला वो माइनस साइन है वो भी कंसिडर करना है ना? डेल्टा एच का जो वैल्यू है तो माइनस फिर सर वैल्यू थोड़ा अलग आ रहा है, क्योंकि वो कैलकुलेट करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है आवाज कट रहा है तुम्हारा। डेल्टा एच अपॉन आर -1/T1 मतलब। इक्वेशन कौन सा यूज कर रहे हेलो हो? वही, हेलो आवाज आ रही है सर? हाँ, कट रहा था आवाज, बोलो फिर से। हाँ सर, वो इक्वेशन दिया है ना वही यूज किया है, पर इस डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1/T2 -1/T1 की वैल्यू पूरी पॉजिटिव आ रही है मेरी, इसलिए मेरा ज्यादा आ रहा है। पूरी पॉजिटिव कैसे आएगी? ये माइनस है, राइट? हाँ ये माइनस है, राइट। T2 क्या है? T2 है 500। 1/2 T2 कितना आएगा? छोटा वैल्यू आएगा, वन राइट? हाँ T1 छोटा वैल्यू आएगा। T1 इज हाउ मच? T1 298, तो उसका बड़ा आएगा। हाँ, तो छोटे से बड़ा घटाएगा तो माइनस आएगा, और वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। डेल्टा एच इज माइनस ना, तो ये पॉजिटिव हो गया ऑलरेडी यहाँ पर। माइनस डेल्टा एच है ना, माइनस डेल्टा एच हाँ कितना यस। पॉजिटिव हो गया, और ये टर्म नेगेटिव है। 1/T2 माइनस हाँ 1 सर सर, गॉट इट सर। माइनस डेल्टा एच की वैल्यू भी माइनस है ना, इसलिए ये ध्यान माइनस में वैल्यू नहीं है। डेल्टा एच का वैल्यू। यस यस यस, सॉरी सर।
हो गया कि नहीं हो गया सबका? नूपुर हो गया क्या? No, sir, I'm solving. अरे कितना टाइम लगता है रे? Sorry, sir. Okay, so let me explain you this concept also. भूल गया था ये. So if you plot ln k versus 1 by t, ये equation में essentially same we are plotting ln k versus 1 by t. What we get is this type of curve for endothermic reaction and this type of curve for exothermic reaction. Right? पॉजिटिव स्लोप आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बिकॉज एंडोथर्मिक में ये डेल्टा एच इज पॉजिटिव, सो माइनस है, और यहाँ पर ये टेम्परेचर से बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा. राइट, 1/t प्लॉट किया एल एन के वर्सेज 1/t. दैट मीन्स एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू विल गो दिस वे. राइट, 1/t will go this way. That means k will increase as the temperature increases for endothermic reaction. And for exothermic reaction, as the temperature increases, the k value decreases. समझ में आ रहा हूँ ये? समझा कि नहीं समझा ये? Yes, sir. Right? And that is why what you are seeing now is k value हमारा 298 पे कितना आया था? Sir, 609,259.76. Right? 609,895 something आया था. Right? It was very high value of k. And at 500 Kelvin k value कितना हो गया? 0.18. 0.18. So it has decreased, right? This is temperature बढ़ा. That means as you increase by as you increase temperature 1/t decrease. That means इधर आ गया, right? Exothermic reaction है हमारा. Exothermic reaction में k value will decrease as we increase the temperature. Right? Is that understood? Whereas for endothermic reaction, Yes, sir. as we increase the temperature, इधर जाएगा ये left side में जाएगा तो then what will happen is your k value will increase. That is why endothermic reaction के always keep the maximum temperature, and for exothermic reaction we always keep the minimum temperature इस side में because we want a higher k value. Right? That means if delta H0 is negative, exothermic reaction equilibrium constant decreases as temperature increases. And if delta H0 is positive, that is the endothermic reaction equilibrium constant increases as temperature decreases. Sorry, and this temperature increase चाहिए यहाँ पर. वहाँ पर गलती है. Let me correct that. ठीक है. So for endothermic reaction, as temperature increases, k value increases, and for exothermic reaction, as temperature increases, k value decreases. ठीक है. Any doubts, questions?
ठीक है, so we'll continue from here tomorrow. Tomorrow we'll have a lecture at 11:10. And I've given an assignment which is based on Unit 4, which you need to submit. और जो मैंने स्टेबिलिटी का बताया बराबर अंडरस्टैंड करो और बराबर ड्रॉ करो डायग्राम जिसको भी आ रहा है वो. Any questions, doubts on what we did today? We'll stop here today.